what we learned was that if you have a plus b to the power of n, this is the formula and that is given in your formula sheet as well, right? ये formula आपने लास्ट क्लास में सीखा था, nc2 a पावर n माइनस टू b पावर 2 एंड सो ऑन. अगर a की जगह 1 आ जाए, the formula is the same, but because a is 1, so the formula becomes 1 plus nc1 b power 1 plus nc2 b power 2 plus nc3 b power 3 एंड so on. क्योंकि 1 के ऊपर any power means 1 है ना, तो इसलिए ये फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो जाता है, बट द फॉर्मूला इज द सेम. ठीक है. आई वांट यू पीपल राइट नाउ टू डू एन एक्सपेंशन. अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट यू ओनली हैव टू एक्सपैंड फर्स्ट थ्री टर्म्स. इसका मतलब दिस इज माई फर्स्ट टर्म, दिस इज माई सेकेंड टर्म, दिस इज माई थर्ड टर्म, दैट्स इट. NC3 तक नहीं जाना. या सही है, थ्री टर्म्स की बात हो रही है. अगर वो एक्स क्यूब बोलेगा तो एक्स क्यूब तक जाएंगे, एक्स स्क्वायर बोलेगा एक्स स्क्वायर तक. फर्स्ट थ्री टर्म्स बोलेगा तो वन इज ऑल्सो अ टर्म. ठीक है. तो आपने बस यहां तक एक्सपैंड करना होगा. आपने पार्ट बी जी एच, बस ये तीन एक्सपेंशन करो एंड देन आई विल मूव फॉरवर्ड. सही है. जरा ग्रुप पे मैसेज डाल. देखो, once you have done this expansion, let's say with part G आपको एक टर्म मिला होगा कांस्टेंट 2 पावर 8 कितना होता है 128 256. 256 फिर एक टर्म आया होगा एक्स स्क्वायर में, एक टर्म आया होगा एक्स फोर में एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना. देखो, find the coefficient of x power 4 in the expansion of 2x plus 1 to the power of 12. ठीक है. नाउ आई कैन डू दिस डायरेक्टली. ठीक है. कैसे डायरेक्टली कर सकता हूं मैं कि आई नो द फॉर्मूला इज व्हाट, a पावर n प्लस एन सी वन ए पावर n माइनस वन और फिर a पावर n माइनस टू. अब मुझे x पावर 4 चाहिए. x पावर 4 कैसे बनेगा, जब मैं 12 माइनस 8 कर रहा हूँ. समझ में आ रहा है. तो अगर यहाँ पे देखो, प्लस nc2 n माइनस टू होता है, nc3 a पावर n माइनस थ्री होगा. तो इफ आई गो अप टू nc8 a पावर n माइनस एट और 12 माइनस एट इन माई केस, आई विल गेट द पावर 4. सही है. बट देर मस्ट बी अ मेथड जिससे हम डायरेक्टली फिगर आउट कर लें कि nc8 करें या 7 करें या 6 करें या 5 करें, क्या हम करें कि डायरेक्टली हमें पता लग जाए कि किस टर्म पे पावर 4 आएगी. जैसे इस क्वेश्चन में इसको करने का तरीका क्या है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ. देखो, we know with this term that it is nc r a पावर n माइनस r और b पावर r यूं होता है, राइट. आप इसको पहले यूं लिख लो, आप सब यूं लिख लो, nc r a पावर n माइनस r एंड b पावर r. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी यूज टू फिगर आउट द होल टर्म. सही है, हम ये यूज कर रहे होते हैं. अब n की वैल्यू तो मुझे पता है विच इज 12, बट लेट्स से इन दिस क्वेश्चन मुझे ये r नहीं पता, आर अननोन है. सही है. मुझे अगर आर पता लग जाए कि आर क्या लेना है, कि वन लेना है, टू लेना है, थ्री फोर फाइव, क्योंकि 12 तक क्या तो हम पूरा एक्सपैंड कर दें, बट बहुत लेंदी हो जाएगा. तो अगर हमें डायरेक्टली आर पता लग जाए तो काम आसान हो जाएगा. ठीक है ना. इन ए की प्लेस में मेरे पास क्या आएगा, 2x टू द पावर n माइनस आर. बी की जगह तो वन ही है तो वन लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल्स टू. अच्छा, n की जगह 12 ही लिखे आप लोग यहाँ पे ना, ये 12 ही है. इज इक्वल्स टू मुझे x की पावर चाहिए क्या, 8, राइट. अच्छा, अब when you reach this point you will ignore all your constants and just focus on your variable. वेरिएबल क्या है, x है. x के ऊपर क्या पावर है, 12 माइनस आर इज इक्वल्स टू x की पावर 8. तो r कैसे निकालोगे, आप कहोगे 12 माइनस आर शुड बी इज इक्वल्स टू 8. r की वैल्यू 4 आ गई डायरेक्टली. नहीं, x की वैल्यू मुझे 4 चाहिए, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया ना, ये 4 था. तो इस केस में यहाँ पे जब 4 होगा तो आंसर मेरे पास 8 आ जाएगा. मैंने इसको स्विच कर दिया. तो देखो, r इज इक्वल टू 8 डायरेक्टली मिल गया. अब जब r इज इक्वल टू 8 मिल गया, आपने डायरेक्टली 12c8 लिखा, a टू द पावर 12 माइनस 8 लिखा और b टू द पावर 8 लिख दिया. लेकिन वन लिखने की जरूरत नहीं होती, कोएफिशिएंट आ गए, बस खत्म. 12c8 मैं मुझे बता दो 12c8 क्या होता है, कैलकुलेटर से बताओ मुझे. 495 इंटू 2 की पावर 4 होता है 16, x पावर 4 है ना. 495 इंटू 16 करो,
जल्दी से बताओ यार। 79, ओके 7920 x⁴, लेकिन आप लोग आंसर क्या दोगे, सिर्फ 7920, क्योंकि कोएफिशिएंट पूछ रहा था। ठीक है, लेट मी जस्ट गिव यू वन मोर एग्जांपल। ठीक है, आई विल टेक क्वेश्चन नंबर 9, 8। चलो 8 और 9 में दोनों कर रहा हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि पास पेपर्स वाले आप लोग खुद करोगे। लेट्स फर्स्ट टेक क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8 में क्या है, आई नीड टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ 8 एंड y⁴ 5। असी बेटा बोर्ड पे देखना है आपने 5 नेक्स्ट 10 मिनट्स तक। तो अगेन 12C3 में 12C r लिख लेता हूँ यहाँ पे, 13 सॉरी। ए की जगह क्या है, x⁴ होता है, और बी की जगह क्या है, -2y। अच्छा, ओवर हेयर आप कांस्टेंट नॉ भी लिखो ना, फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ वेरिएबल पे फोकस करना होता है। तो आई कैन जस्ट गेट रिड ऑफ दिस वेरिएबल। ठीक है, मुझे इस पर जरूरत नहीं इसकी। टू द पावर r इज इक्वल्स टू x⁴ 8 y⁴ 5। तो आपने इसको पहले सिंप्लीफाई करा, इंटू y⁴r इज इक्वल्स टू x⁴ 8 और y⁴ 5। क्या दिख रही है r की वैल्यू, 5। दोनों तरीके से, x के ऊपर ये पावर्स है ना, तो 13 माइनस r इज इक्वल्स टू 8 लिखो, r इज इक्वल्स टू 5 आएगा। या अगर तुम y की पावर्स कंपेयर कर लोगे तब तो दिख ही रहा है r इज इक्वल्स टू 5 है ना। आपने करा क्या, यू राइट दिस एज 13C5 x⁴ 13 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 8। और अब b की जगह क्या लिखना है, -2y, -2y⁴ ये जो भी आंसर आएगा मैं इस पे नहीं जा रहा। ठीक है, कैलकुलेटर में डाल के आप लोग खुद कर सकते हो। 13C5 इंटू 2⁻5 ये आप लोग खुद कर लोगे, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एट द मोमेंट। ठीक है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, अच्छा, अगर ये डिनोमिनेटर में होगा, प्लीज बी वेरी केयरफुल विद दिस। 12C r है, a की जगह मैंने लिखा x⁴ 12 माइनस r मल्टीप्लाइड बाय b⁴ होता है। b में x की क्या पावर है, -2। इसका आपने ख्याल रखना है बेटा, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस। b में x की पावर -2 है, टू द पावर ऑफ r इज इक्वल्स टू, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, लास्ट क्लास में बताया था, विदाउट x या x की पावर 0 लिख दिया आपने। अब पहले इन दोनों को कंबाइन करा आपने, सही सही, 12 माइनस r, I will just explain the question again. Multiply by x⁴ -2r is equals to x⁴ of 0. Now when it's multiplying, we add the powers, है ना। तो 12 माइनस r प्लस r की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। आपने क्या करना है, 12 है, आपने लिखा 12C4, a की जगह लिखा x⁴ 12 - 4 इज 8, b की जगह है -3/x² है ना। 12C4 बताओ कैलकुलेटर से क्या है, 495। 495 x⁴ मल्टीप्लाई बाय 3/4 81 होता है ना, अपॉन x⁴ 8। x 8 और 8 कैंसिल हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ x हो गया। 495 इंटू 81 करो। ऑल राइट, 40095। चेक द आंसर बेटा, कोई चेक, प्लीज चेक द आंसर फ्रॉम, लेट मी नो इफ इट्स राइट और रॉन्ग। Okay, let me just explain it again. As soon as it said the find the term independent of x, what I could have done was I would have could have substituted the whole thing in the formula and just tried and looked at the term that was without x. But that would have been lengthy, as I explained earlier. That would have been too lengthy. So what I do is I try and figure out what should I put over here in place of r that will give me a term that basically in this case cancels out x values, है ना। So I did 12C r a to the power n minus r b to the power of r is equals to, independent of x means x is power 0. Now I will just look at the variables because I need to cancel out x. So x, this is 12 minus r minus 2r. Yeah, we did not take b as that because beta we are just trying to look at the
the variable x at the moment. Okay, we do not care about 3 because we are just trying to make sure x becomes 0. Once we get this value of r, then yes, we will take 3 into consideration like I did at the end. Okay, initially what we want is a value of r that will give us the required power of x, in this case x to the power of 0. So I put it equals to x power 0. I make this equation, find the value of r, and then just put it back to LC4. Yeah, if I get r is equals to 5 or 3 or 2, whatever it is. Yes, x power independent means x power 0. Okay. Okay. So I have explained question number 8 and 9 as well. I will give you a couple of. Have you noted this down yet or no? I want you to note both of these questions down, 8 and 9, because you can use this to figure out the remaining questions that I will assign you right now. Make sure you have noted both of these questions down. Exactly how to attempt it. सुमान क्या होना है? हाँ फिर भी मोहम्मद on. I mean, हाँ इंटीग्रेशन भी आसान है नहीं. Obviously it is lengthy, but again बेटा अगर आपने मेहनत नहीं करी, प्रैक्टिस करी, उसके बाद डिफरेंट नहीं करी ना, तुम चाह रहे हो अगले साल भी सर चलाने के साथ में थोड़ा P1 और पढ़ूँ, मजा यार एक बार पढ़ के क्या मजा है जो 2 बार पढ़ने. दूसरे में टेस्ट का सिलेबस दिया है तो अच्छा बात का सिलेबस दिया है मैं मुझको क्या है एक भी चीज की काफी इजी है. हाँ and okay, tell me the expansion for 12a. Plus 4x plus 7x. 1 minus 4x plus 7x squared. Beta, is this correct, everyone? Okay. Now for part B, it is 2 plus 3x minus x squared. And for this expansion, I already have 1 minus 4x plus 7x squared. Now listen, beta. Dekho, the I have to find the coefficient of x squared. It is so straightforward. What terms will give you x squared? I think that's obvious. 3x into minus 4x, right? So you will say, okay, sir, so that will be minus 12x squared. 2 into 7, 14x squared plus 14x squared. And minus x squared into 1 is minus x squared. So minus 12 plus 14 is 2. 2 minus 1 is x squared. So the coefficient will be 1. Right, Uru Jaita? Huh? Mohammed, did you understand? Those who are online, better, did you understand how did I find the exact coefficient? Wajiha, Sama, Ali. Wajiha, why are you so late? I didn't see you in the start at the start of the class. Ahmad, Ali, Sama, did you understand? How will we find the coefficient of x square, whatever is asked in the question? Yeah. Shouldn't the first term be 7x cube? Good question. But the point is, beta, they're not asking us for the coefficient of this term. You're talking about this term, beta? Which term should be 7x cube? No, beta. Look, if I apply this on the formula, it is 1 plus NC1. So 1 will remain as it is, b to the power of 1, right? Plus NC2, b to the power of 2. So this is the first term, this is the second term, and this is my third term, right? So the third term will be x squared. Be very careful. This is what I mentioned, Sama, that 1 is also a term. Be very careful. If they ask you to expand up to x cube, in that case, you will go up to NC3 or whatever is needed. But 1 is considered a term. Yeah, be very careful with that. Mohammed, you clear? Uruj and Naseeb, clear so far? Okay. 13. I just want to add one more thing. I want everyone to look at the board. You will be doing 13, 14 on your own. 15, I am about to explain over here. So I want everyone to listen better. Stop your work for a moment. Before Azan happens, I want to explain one thing. Azan is nearly there. हाँ मैंने समझाऊँ खुद कर तब मैं करा दूँ खुद क्यों आए खुद ही करते हो मेरा फेवरेट आसानी हुई. Okay, beta, I want everyone to now understand this very clearly. There are questions where this power is unknown.
You cannot put NC1 in the calculator and try and figure out the answer, right? Calculator to figure out nahi karega. So what you need to understand is that NC1 will be written as N. You will make algebraic equation ऐसे बन जाएगी. NC2, in place of NC2, you will write N into N minus 1 upon 2. NC3 will be N minus 1, N minus 2 upon 3 into 2 into 1. Basically, it starts like 2 into 1 upon 1, then 3 into 2 into 1. So NC4 will be what? N minus 1, N minus 2, N minus 3, and divided by? 4 into 3. Lovely. 4 into 3 into 2 into 1. And because I cannot use this, if N is unknown, so I will use this. ठीक है? अब देखो क्या होगा. So it is expanded up till x square, and what you can see is that the x term is 0. ठीक है? Now let's expand it. 1 plus x remains as it is. This will be 2 to the power of n plus nc1 की जगह what can I write? N b to the power of 1, right? In place of nc2, what will I write? N x squared तक है ना? It is up till x squared now. So nc2 will give me an x squared term. Beta, let me just complete it and then I will explain. Okay. So NC2 will be n into n minus 1 upon 2 factorial, or 2 into minus x upon 4 whole squared. Right? Now 1 plus x to power n, this will become minus nx upon 4, and this will become what? N square minus n upon 2 multiplied by x power 4. क्यों लिख दिया मैंने? Why did I write 4? X square, right? Into x square upon 16. Now listen better. When I multiply 2 power n by 1, I will get 2 power n. What terms will give me x? This into this, right? So this will become plus 2 power nx and 1 multiplied by this, right? So minus nx upon 4. Can I say in this question, in this term, the x coefficient is 0? Over here, the x coefficient, when I basically this minus this is equals to 0, right? And what terms are giving me x square? 1 into x square. ये वाला है. So x square term will be 1 into this term. So that will become n square minus n upon 32 x squared, and what else? X and this, है ना? Minus what? nx square upon 4. अच्छा. So can I say 2 power n is equals to p? Right? The constant term. And can I also say, if I look at this term only, let's take x common, 2 power n minus n upon 4, and that will be is equals to 0. Because there is no x term over here. So this coefficient of x, or I can just simply say this should be is equals to 2 power n क्या है? P. Remember this, ठीक है? And with x square term, लेकिन p की वैल्यू कैसे आएगी? Find the values of n, p and q. At least one variable we should be able to find, right? Yeah. Huh? Huh? We are missing out. I'm just missing out on one. I think I've missed a step that I cannot find even one variable. So the x square term is
If I take x square common, that is n square minus n upon 32 minus n upon 4. And this is equals to q. We should be able to find one term at least. The first two terms in the ascending powers of x in the expansion of 1 plus x and 2 minus x upon 4. What have I missed? I'm just trying to figure this out. Because we have to figure out n over here. Uh, कहाँ पे मुझे बताओ ना, मिसिंग आउट ऑन एक्सपेंशन है। फॉर एग्जांपल पूरी ब्रैकेट में 2 minus x upon 4 है ना। Oh, oh, horrible expansion. Sorry, guys. I have done it all wrong. Why did you not tell me when I was expanding? अच्छा, तुमने देखा। Guys, this was horrible expansion. I just did the expansion completely wrong. Why? Because I have been telling you since the beginning that the power n plus nc1, a power n minus 1, b power 1 and so on, right? I ignored the 2. Why did I ignore the 2? I have no idea, beta. चलो बेटा, start doing it on your own. आप लोग करो while I find the p, q and n value on my own as well. So this will be 2 to the power of n plus nc1 is n, 2 to the power uh, n minus 1, and b is minus x upon 4 to the power of 1. nc2 is n square minus n upon 2, 2 to the power of n minus 2, and this will become x square upon 16. Lovely. X. 2 power nx minus 2 power, abhi this was n over here as well, yaar. 2n, n over here. Love upper. Why is it becoming so lengthy? Okay, n is equals to 4 finally. I have it. Can you check the answer? I'll explain the working. So go one, huh? Huh.
sorry, 2 power minus 1 goes in the denominator, right? 4 2s are 8. I'll just explain the working quickly before the class ends, beta. Listen to, oh God, it's very late now. Dekho, beta. So once I corrected my expansion, the x power 1 term is given by 2 power n into x, right? And 1 multiplied by this whole term. So 1 multiplied by 2 power n minus 1 into minus x upon 4. Okay. So when I take x common, I have this term which is set equals to 0. ठीक है, जब मैंने इक्वल टू 0 कर लिया, I know that p is equals to 2 power n. ठीक है. Now from this 2 power n minus 1 को I can write it as 2 power n into 2 power minus 1, like I wrote it over here. ठीक है. So I brought this on the right hand side, so 2 power n is equals to n into 2 power n upon, and I'll bring this in the denominator 4 times 2 8. ठीक है. मैं यहाँ से 2 हटा देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप पे मैंने 2 नीचे ले आया. ठीक है. एंड देन 2 and cancels, 4 2s are 8 multiplied, so n is equals to 8. Once you have the value of 8, you can figure out p and q values. Okay? But this is the type of question that will come up very regularly where the n will be unknown and you will have to use this thing over here. But beta, I'll have to end the class for now because I have to go for namaz. I want everyone to make sure that you are done with all of these questions by the next class, because there is nothing more in binomial theorem except us going through most of the past papers. Okay? Let me confirm. Yes, there's nothing more. And do attempt this question again on your own. I just made a mistake of not expanding it properly. Thank you, everyone. I'll see you on Wednesday.